Good morning students, my name is Suvas Vora, Assistant Professor of Electrical Department. We are already start the Microprocessors and Controller subject. Chapter number 1 is completed. So with the chapter number 1 we can see what is the microprocessors, what is the microcomputer, microcontroller, what is the benefit of the microprocessors and microcontrollers, what is the difference and comparisons of these microcontrollers and microcomputer, microcontroller processors, and etc. And then after we can see the two different architectures of the ICs, the von Neumann methods and the hardware methods. So now start with the main topic of the subject is microprocessors, and the IC is 8085. So today's topic is 8085 microprocessors architecture and pin diagram. So in the model is a conceptual representation of the real object, and it can take many forms such as the text descriptions, then drawing or build the structures. Most of us have seen the architecture model of a building. In similar way, the microprocessor can be represented in terms of the hardware. It means the physical electronic components and the programming model. So the 8085 is and the 8-bit microprocessors, as it operate on a 8-bit at a time and is created with the NMOS technology. So these microprocessors exhibit some unique characteristic, and this is their reason it still hold the popularity among the microprocessors. So the basically 8085 was the first commercially successful microprocessor by the Intel, and as some of the architectural drawback associated with the 8080 was also eliminated by the 8085. It means that 8085 प्रोसेसर में कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि मैथमेटिकल हम नहीं कर सकते थे, देन अरिथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे, सम लॉजिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे, तो वो सब कुछ एलिमिनेट करके कमर्शियली 8085 को लॉन्च किया इंटेल ने. सो द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज द 8-bit प्रोसेसर अवेलेबल एज द 14-pin IC पैकेज मीन्स के एक IC होती है 8085 की, उसके 40 पिंस यानी कि 40 स्लैग होते हैं, एंड यूज दी +5 वोल्ट ऑफ द पावर. सो इट कैन रन एट अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 MHz, एंड इट डेटा बस विथ इज द 8-bit एंड द एड्रेस बस विड्थ इज 16 bits. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कि डेटा 8-bit होते हैं और एड्रेस लाइन्स हैज़ अ 16 bits, यानी कि एक साथ हम 2 डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड इट कैन एड्रेस इज 216, जो हम जानते हैं कंप्यूटर की जो है, इट मीन्स द 2x26 64 KB ऑफ द मेमोरीज. इनिशियल स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि इतनी ही मेमोरी आती थी. सो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि we describe the simplified hardware model of the microprocessor as a part of the microprocessor based system, and is shown the 3 common points: ALU, it means the arithmetic logic units, then register array, and the control. So now the hardware model and the programming model specifications to the 8085 microprocessor is. Now we can study the microprocessor architecture. So the architecture of the 8085 microprocessors provide the idea about what are the operations to be executed and how these are performed. So it can be performed
or operations that are given is, the first one is operands on and the store the 8-bit data. Then after the it execute the arithmetic and logic operations, यानी कि कुछ भी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर 2 रूम है और मेन हॉल है तो मेन हॉल में ही हम जो भी एंटरिंग होता है या कुछ भी प्रोसेस करनी होती है तो वो मेन हॉल में करते हैं. इट मीन्स दैट के जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस यानी कि ALU में ही होता है. सो 8085 ऑल्सो सीक्वेंस द इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूट. सो उसको प्रॉपरली फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करना होता है, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना पड़ता है. एंड द स्टोर द डेटा टेम्पररी. अब उसमें रजिस्टर होते हैं जो टेम्पररीली डेटा स्टोर करते हैं. सो नाउ द आर्किटेक्चर फॉर्मेट यू कैन सी दैट के हियर द 8-bit डेटा बस which are connected of the all the processors. So interrupt controls, there are the interrupt means जैसे हम CPU के अंदर हम हेडफोन कनेक्ट करते हैं या हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं तो देर आर द इंटरप्ट्स कंट्रोल. देन आफ्टर द सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स, यानी कि हम जो भी A टाइप करते हैं या B टाइप करते हैं, A के बाद B करते हैं, देन के सब लिखना है तो SUB लिखते हैं. तो दीज आर द एग्जीक्यूट इन द सीक्वेंस के जो हम जिस तरह के फॉर्मेट में चाहते हैं वो सीरियली इन एंड सीरियली आउट हो सकता है. देन आफ्टर दीज आर द मेन प्रोसेसर्स ELU, इट मीन्स द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट which have to all the controls. it means the accumulators, then temporary register, जैसे मैंने बताया कि डेटा स्टोर करने के लिए temporary register यूज़ होते हैं. and then flag. yes, flag is the most important part in the ALU. हम जाते हैं कि अगर हम एडिशंस करते हैं 2 डिजिट्स का, फॉर एग्जांपल कि हम 99 + 99 करते हैं तो वी हैव दी 3 डिजिट्स. इट मीन्स के हमारे पास एक एडिशनली डिजिट ऐड होता है. तो वो हमको किस तरह से पता चलेगा कि अगर 2 रैंडम वैल्यूज़ हम कलेक्ट करते हैं डेटा में से और एडिशंस करते हैं और एक नया बिट जनरेट होता है तो वो फ्लैग थ्रू हमको पता चलेगा कि वो पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव आंसर है या एडिशनली 1 बिट ऐड हुआ है, तो वो फ्लैग थ्रू होगा. तो दीज आर दी कनेक्टेड विथ द internal buses. Then after the instructions registers are the instructions decoder. यानी कि हमारे पास जो भी डेटा जो इंस्ट्रक्शंस है उसका एक पूरा बंच होता है जो इसको हम मेमोरी बोलते हैं. तो वो वहाँ से वो पूरा डेटा कलेक्ट करेगा अगर हम कोई भी एप्लीकेशंस रन करना चाहते हैं. So these are the instructions, these are the timing in the control circuits. Then after the address buffers and the data and address buffers. Then 8 to 16 is the only address bus and the data bus AD0 to AD7. यानी कि आगे हमने देखा कि भाई जो हम एड्रेस बस है वो 16 बिट हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बट डेटा इज़ ओनली ट्रांसफ़र द 8 बिट. तो 8 bit is D0 to D7 is the 8 bit and the 16 bit address line is A0 to A15. Then after the stack pointer, then PC, then register set, and these are all the considered in the architecture. Now we can study the step by step of the all parts. The first one is the arithmetic and logic unit ALU. So ALU perform the actual numerical and the logical operations such as the addition, subtraction and add or not and etc. It is use the data from memory and from the accumulator to perform the operations. वो accumulator से डेटा लेके डेटा कलेक्ट करके वहाँ पे परफॉर्म करेगा एंड द रिजल्ट ऑफ द अरिथमेटिक एंड द लॉजिक ऑपरेशन आर स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटर एक ऐसे टाइप का 16 बिट का
रजिस्टर है कि जिसके अंदर पूरा अरिथमेटिक हो या लॉजिकल ऑपरेशन हो वो वहाँ पे होगा. देन आफ्टर द रजिस्टर्स, सो बेसिकली the 8085 includes the 6 registers and the one is the accumulator and one flag registers. जैसे हमने WZ उसमें देखा है as shown in the figures. So they are briefly described as the here the 8085 has the 6 general purpose register to store the 8-bit data. जनरल पर्पस रजिस्टर्स, अब कौन कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर है? सो BCDEH and L. So they are the another we can use the. अब इंडिविजुअली हम देखें तो BCDEH और L आर हैव द 8-bit रजिस्टर. ये जो भी है इंडिविजुअली हम यूज़ करते हैं तो 8-bit रजिस्टर, बट हमने देखा कि एड्रेस लाइन इज़ अ 16-bit लाइन, सो हमको 16-bit रजिस्टर भी चाहिए, तो वी कैन यूज़ द पेयर ऑफ दिस रजिस्टर्स. सो पेयर ऑफ द रजिस्टर इज़ BC DE एंड HL. हम रेंडमली यूज़ नहीं कर सकते. दिस आर द पेयर ऑफ द डेटा कि BC यूज़ कर सकते हैं 16-bit, देन आफ्टर DE और HL टू परफॉर्म द सम 16-bit ऑपरेशन. सो द programmer कैन बी use this register to store or copy the data into the register by using the data copy instructions. अब वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं. Then the accumulator. So accumulator is a 8-bit register that is the part of the arithmetic and logic unit. So this register is used to store the 8-bit data and to perform the arithmetic and logic operations, and the result of the operations is stored in the accumulator. So accumulator is also identify the register A. Okay, so then after the flag registers. So flag register is जैसे मैंने आपको बताया कि arithmetic and logic operations में किस तरह का ऑपरेशंस कर रहे हैं और उसकी क्या सिचुएशंस है आउटपुट रिजल्ट का, वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है, मैटर करता है, बिकॉज द स्पेस के लिए. सो द ALU इंक्लूड्स द 5 फ्लिप फ्लॉप विच आर सेट और रीसेट आफ्टर द ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू द डेटा कंडीशंस of the result in the accumulator and the other registers, so that they are called the 0. So they are called the 0 is represented by Z. Then after the carry means the CY, then sign is S, then parity is the B, and auxiliary carry is AC. So they are listed in the you can see here, and their bit is positions in the flag registers. Now the most commonly used of the flags are the 0, carry and sign. So the microprocessor uses these flags to test the data conditions, and the flag have the critical importance in the decisions making process of the microprocessors. So these processor is conditions of the flag are tested through the software instructions. So here you can see that what is the functions of this. So first one is D7 is the S means the sign. So set if the most significant bit of the result is set. Then after the 0 the set if the result is 0, यानी कि अगर 0 है तो पूरी वैल्यू 0 0 होगी. Then auxiliary carry set if there was a carry out from the 3 to 4 bit of all the result. जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी 1 तब होगी जब अगर हमारा मल्टीप्लिकेशंस में 2 बिट है और आउटपुट 3 बिट आ रहा है. Then after the parity check, set the parity. The number of the bit is the result is even. अब parity में 1 तब दिखाएगा जब पॉजिटिव होगा, अगर इवन नंबर होगा, अगर ऑड है तो 0 दिखाएगा. Then after the last one is the carry. Set there was the carry during the additions or borrow the during the subtractions and comparisons.
यानी कि कैरी में तब 1 दिखाएगा कि जब हमारा एडिशंस या बोरो करेगा। एडिशंस में जैसे हम करते हैं सिंपल कैलकुलेशंस, सो एडिशंस में कैरी जनरेट होगी तब 1 दिखाएगा, अदरवाइज 0। सो दीज आर द फ्लैग रजिस्टर्स। देन आफ्टर द प्रोग्राम काउंटर। सो प्रोग्राम काउंटर is the 16-bit resistance deal with the sequencing the execute of the instructions। यानी कि जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मुझे सब लिखना है तो SUB ही टाइप होना चाहिए, तो वो एक सीक्वेंस फॉलो करना होना चाहिए, तो वो सीक्वेंस प्रोग्राम काउंटर थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो दिस रजिस्टर इज द मेमोरी पॉइंटर एंड द माइक्रो प्रोसेसर यूजेस दिस रजिस्टर टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सीक्वेंसली ही आपको एग्जीक्यूट करेगा। तो वी कैन यूज द प्रोग्राम काउंटर फॉर द मेमोरी रजिस्टर्स। सो द फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट टू मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बिट इज टू बी फैच। यानी कि 1 by 1 डेटा फैच करेगा। व्हेन द बिट इज बीइंग फैच, the program counter is automatically increased by the 1 to the point of the next memory location। यानी कि सपोज के अब भाई मेरा प्रोग्राम काउंटर 2001 पे एड्रेस लोकेशन पे जो डेटा है वो फैच कर रहा है, तो उसके बाद 2002 का ही डेटा फैच करेगा और कोई डेटा फैच नहीं करेगा। वो सिक्वेंशियली वही मेंटेन करेगा जब तक उसको मैं पर्टिकुलर एड्रेस नहीं देता हूँ तब तक। देन आफ्टर द स्टैक पॉइंटर। सो द स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो द 16-bit रजिस्टर एंड यूज एज अ मेमोरी पॉइंटर। इट पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशंस इन द रीड राइट मेमोरी कॉल्ड द स्टैक एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय द लोडिंग द 16-bit एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर में क्या होता है कि पहले हमको डेटा लोडिंग करना पड़ता है एंड देन आफ्टर गो टू द स्टोरेज मेमोरी। यानी कि उसको स्टैक पॉइंटर में हमको मेंशन करना पड़ता है कि इसको रीड करना है या राइट करना है। सो दीज आर द बेसिक आर्किटेक्चर्स ऑफ द 8085। नाउ वी कैन सी द pin diagram of the 8085. So the term microprocessor unit is similarly to the central processing unit CPU। जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर यूनिट है वैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर CPU है, यूज इन द ट्रेडिशनल कंप्यूटर। सो द वी डिफाइन द MPU as a device or the group of the device that can communicate with the peripheral, provided timing signals, direct data, then data flow, then perform the computing task as specified by the instructions in the memory। So using these descriptions, the microprocessors can almost qualified as a microprocessor unit, but we have the two limitations. First one is the low order address bus of the 8085 microprocessor is multiplexed। It means the time shared, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। and second one is the appropriate control signals need to be generated to interface the memory and the input output with the 8085। यानी कि अगर मुझे कुछ एडिशनली ऐड करना है तो उसको पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए। जैसे कि मैं एट अ टाइम मैं माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करता हूँ, तो कौन सा फैच सबसे पहले कंसिडर करना है वो डिसीजन पावर होना चाहिए, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट द पिन डायग्राम। सो 8085A जनरली यूज्ड एंड is the 8-bit general purpose register capable of the addressing is 16K memory, जैसे आगे हमने देखा वो। Now these are the basic pin diagram of the 8085A। A is the system। So pin number 1 and 2 is the auxiliaries X1 and X2।
जनरली वहाँ पे क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं। क्रिस्टल मीन्स दी, आगे मैं आपको बताऊंगा। क्रिस्टल जनरली आईसी को अगर 5 वोल्ट चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने आगे देखा कि 3 मेगाहर्ट्ज़ चाहिए, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी तभी माइक्रो प्रोसेसर रन कर पाएगा। तो वो रन करने के लिए देन पिन नंबर 3 इज़ द रीसेट द आउटपुट, यानी कि जो रीसेट करने हैं आईसी का उसके लिए। देन एसओडी एसआईडी अगर हम देखेंगे द ट्रैप, देन रीसेट पिंस 7, 8, 9, देन इंटरप्ट द 10 and 11, then address and data line combined 12 to 19, the 20 is the VSS यानी कि पॉजिटिव पार्ट, then 21 to 28 is the address line only, then S0 switch, then read and write operations के लिए, then PPP, then S1 input output memory, read reset in clock, then HLDA and hold, वो आगे हम देखेंगे, and VCC is the minus. Now you can see here the X1 and X2 is the connect with the crystals, then after these are the serial input output port, the externally initiate of the signals यानी कि externally कुछ ऐड करते हैं, then read and write, reset in, ये जो पिन है 36, then after the external signal clocked, then reset out, clock out, then read, write, input output memory S1, S0, ELE, then address and data line combined and only the address line. Now the specified the all the pins. So all the pins are divided into the several group of, so the address bus and data bus, then power supply signals, clock signals, reset signals, interruption signals, status and control signals, then serial input output signals, and the last one is the DMA request signals. Now address bus and data bus. So higher order address line only A8 to A15, यानी कि only consider the address lines. So these provide the higher order 8 bit of the whole 16 bit address line. जो 16 bit address line है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 bit डेटा, जहाँ पे सिर्फ आपको 8 bit डेटा ट्रांसफ़र करनी है तब ये लाइन यूज़ करते हैं. So it is used to identify a memory locations or the peripheral devices. Then after the multiplexed address buses and the data bus, so the AD0 to AD7, here the both the address and the data line will be utilized. So this bus is the demultiplexed with the help of the ELE signal. Okay, so if the ELE1, so अगर ELE1 हम देंगे, so this bus is work as the lower order address line, means the A0 to A7, यानी कि अगर ALE1 दूंगा मैं, अगर मुझे 16 बिट एड्रेस लाइन ट्रांसमिट करना है तो एक सिग्नल मैं यहाँ पे दूंगा A8 to A15 8 बिट डेटा दूंगा, और बाकी के 8 बिट डेटा मैं ALE में 1 करके दूंगा, क्योंकि ALE1 इज सिलेक्ट फॉर द ओनली एड्रेस लाइन, और ELE0 व्हेन वी कैन ट्रांसमिट द डेटा ऑफ द डेटा बस. So the EL equal to 0, then this bus work as a data bus D0 to D7. Then after the power supply, we are already known that the VCC means the positive power 5 volts and VSS it connect in the ground. Now the clock signal. Clock signal is generally operate the pins or 8085. So they have the two different pins X1 and X2 in the clock out. Now the X1 and X2 is, these are clock input signal connected to the crystals. क्रिस्टल जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए पर्टिकुलर जितनी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एक क्रिस्टल हम यूज़ करते हैं.
Then after another is the LC और RC networks for the oscillators यानी कि frequency के लिए. So normally 6.01 megahertz crystal is connected to this pin. Because of driving by the two network, the operating frequency of the microprocessor unit is 3.0 megahertz. जैसे हमने आगे देखा. Now the clock out. So this is and the output signal used as the system clock. अब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्लॉक चाहिए. जैसे कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिकल में बल्ब चालू करने के लिए सिग्नल देते हैं और सिग्नल को हम जनरली स्विच ऑन बोलते हैं. यहाँ पे भी सब सर्किट को ऑपरेट करने के लिए यानी कि उसको यूटिलाइज करने के लिए, ये तो हम पर्टिकुलर एक आईसी की बात करते हैं, पर इन मोस्ट ऑफली प्रोग्राम यूज्ड और यूज दी देर आर द नंबर ऑफ आईसीज. हम एक नहीं यूज़ करते, नंबर ऑफ आईसीज यूज़ करते हैं. तो वो आईसी को ऑपरेट करना पड़ता है कि भाई अभी ए आईसी में जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करना है. देन आफ्टर द नंबर 2, तो उसके लिए उसको क्लॉक सिस्टम क्लॉक देनी पड़ती है. 1 देंगे, एट दैट टाइम दिस आईसी विल बी रन. So the internal clock frequency is available to this pin, and this pin can be used by the other peripheral system as a clock input for their operations. Then the reset signals, so resets in and reset out. So this is active low input signal. At that time, after the reset, microprocessor start executing the instructions for 0000H. यानी कि reset को लो इनपुट देने के बाद वो एक्सिक्यूट करेगा 0000. इट मीन्स व्हेन द रीसेट इन इक्वल टू 0 द प्रोग्राम काउंटर विल बी 000 यानी कि स्टार्टिंग कंडीशंस में आ जाएगा. नाउ द रीसेट आउट मीन दिस इज द एक्टिवली हाई आउटपुट सिग्नल्स है. सो दिस सिग्नल इज यूज एज द सिस्टम रीसेट टू रीसेट द डिवाइस कनेक्टेड टू द पेरिफेरल systems. Then after the trap is the another signals. So this is achieved the high vector and the non-maskable interrupt, and it has the high priority among other interrupts. So then after the reset interrupt हमने देखा था कि reset 7.5, reset 6.5 and 5.5. So this is actively high and vector maskable interrupt, and their priorities of the reset 7.5, 6.5 and 5.5. तो ये जो है वो हम एक साथ अगर मल्टीपल reset देते हैं तो which one is the priority? So the vector address are 0 point vector address है. यहाँ पे हमने देखा कि वेक्टर तो वेक्टर क्या है? वेक्टर इज द वर्चुअली एड्रेस ऑफ द आईसी के ये जो जैसे कि ट्रैप है तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस है. वैसे ही यहाँ पे रीसेट 7.5 का एड्रेस लोकेशन है 003C. वैसे ही रीसेट का है 6.5 का है 0034 एंड रीसेट 5.5 का है 002C. नाउ द इंटरप्ट सिग्नल्स. So interrupt signal is INTR and INTA. It is achieved high the non-vectored interrupt. So it has the lowest priority among the others. So whenever the device requests the service of the 8085, it has to request service on this pin by making this pin is logic 1. And the INTA, it is the output signal used to indicate that the microprocessor execute the ISR or INTR interrupt. Now the status and the control signals. So status and control signal, first one is the ALE, address latch enable. जैसे हमने आगे देखा कि ऑपरेट करने के लिए ALE को 1 देना पड़ता है और 0 देना पड़ता है टू सिलेक्ट द डेटा और एड्रेस लाइन के लिए. So it is the output signals and used to demultiplex of the AD0 to AD7 to A0 to A07 और D07 सिलेक्ट के लिए. ठीक है. Then after the input output memory.
अब मेमोरी को रीड करना है या राइट करना है वो इससे पता चलेगा। तो दे हैव, हमने देखा कि वहाँ पे दो स्विच दी थी S0 और S1। सो दे हैव द कम्बिनेशंस, वी कैन यूज़ द इनपुट आउटपुट मेमोरीज। सो अगर मैं इनपुट आउटपुट मेमोरी में 0 देता हूँ, S1 is 1 and S0 is 0, at that time the operations will be memory read. Then the again के 0 में यूज़ करता हूँ तो मेमोरी के लिए 0 है एंड 1 इज़ द इनपुट आउटपुट के लिए है। तो S1 और S2 कॉम्बिनेशंस में आप देख सकते हैं मेमोरी रीड ऑपरेशंस एंड 0-1 इज़ द मेमोरी राइट ऑपरेशन। इन सिमिलर वे here we get the 1-1, it means we can use the input output port. So 1-0 is the read operations and 0 and 1 is the write operations. Then read and write बार हमने देखा था, तो this is achieved low output control signal used to read or write data from the memory locations or input output device and vice versa data. Then ready, it is achieved the high input control signals. It is used by the microprocessor unit to detect whether the peripheral are ready for the data transfer or not. If not, processor wait till the signal goes high. Then after the serial input data, this is active the high input pin. It is used to access the serial 1 bit data under the software controls. Then SOD serially output data. In similar way, the actively high and the output pin is operated and it is the serially at the time is a 1 bit data. So when the SIM instruction is executed the SOD, the pin data is set or reset depending on the D7 bit of the accumulator. Then last topic is the hold and HLDA, hold acknowledgement. So DAMA means the direct memory access. So this peripheral device which can use the buses of the microprocessor is called the DMA controller, and first the DMA controller send the request to the microprocessor for use of buses by making the one the hold pin of the microprocessor unit, यानी कि जो डेटा है उसको होल्ड करने के लिए. So the microprocessor unit permits the DMA controller by set it output pin HLDA. When the controller finish its work, it make the HLDA pins low. यानी कि जब होल्ड कंडीशंस करते हैं हम तब 1 देते हैं, तब पूरा प्रोग्राम जो होता है वो वहाँ पे जो भी सिस्टम है वो सेटअप हो जाने के लिए वो पूरी सिस्टम को ब्लॉक करके सिर्फ और सिर्फ जो होल्ड कंडीशंस में जो एग्जीक्यूट किया है वो करेगा, और देन आफ्टर वो कंप्लीट हो जाने के बाद HO होल्ड पिन है वो लो हो जाएगी. सो ये होल्ड क्या है, जनरली मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूँ कि हम जब पीसी डायरेक्टली बंद करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो स्टार्ट होने के लिए कुछ टाइम लेता है. तो दीज आर दी होल्ड सिस्टम. तब क्या होगा कि होल्ड इज़ एक्टिवली 1, तब पूरी प्रोसेस HLDA में रन होगी, एंड देन आफ्टर कंप्लीट हो जाने के बाद एक डैश आता है, डॉट आता है, दीज आर दी होल्ड इज़ 0 यानी कि लो हो जाएगा, एंड द program will be again the restart of the executed. So these are the pin diagrams. So today we can see the 8085 architectures and the pin diagram. If any questions regarding this, you can mail me. If any query regarding this, you can call me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.